Hello everyone. So today we will discuss the lecture number 2 of federalism. So in earlier topic of federalism, we have discussed the concept of federalism. What federalism is and what does the federalism means. And we have discussed the difference between federalism and unitary form of government. What are the features in the constitution which are federal in character and what are the features in the constitution which are unitary in character. The Constitution of India is blend of both federalism as well as unitary feature. So we will discuss in detail what are the unitary features in our Constitution, and we have discussed the system of three lists in our Constitution in the 7th schedule of the Constitution. In federalism, the division of power is necessary. So how the power is divided in the Constitution of India? How Constitution ensures the division of power between the different sections of between the different organs and between the different levels of the government. So आज हम पढ़ेंगे कि what are the features of federalism in our constitution. So first the features of federalism is the division of power. There should be proper division of power between the different organs and between the different levels of the government. For federalism, the division of power is a necessary prerequisite condition. So, if power is divided, then in what form power will be divided? A power divide कैसे होगा power? So, power का division हम देखेंगे कि power will be divided in between organs and between levels of the government. ये जो power divide होगा, वो सरकार के विभिन्न अंगों और विभिन्न स्तर के बीच में power का division होगा. और ये विभिन्न ऑर्गन्स क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? सो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. These are the three organs of the government, and power is divided between legislative, executive and judiciary. Legislative is responsible to make the law. ये कानून बनाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं. And executive is responsible to implement the law made by the legislative. जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून बनाया गया है, उस कानून को एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंप्लीमेंट लागू कराया जाता है. एंड जुडिशियरी कीप्स एन आई ऑन बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. जुडिशियरी जो है वो दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के ऊपर नजर रखेगा. सो अगर हम बात करेंगे कि ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, सो दिस डिवीजन ऑफ पावर इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. This division of power is also known as horizontal division of power. यहाँ पर legislative है, यहाँ executive है और यहाँ पर judiciary है. And in this horizontal division of power, nobody is subordinate to anyone. कोई किसी के अधीन नहीं है. Legislative, executive के अधीन नहीं है, judiciary, executive और legislative के अधीन नहीं है. सब एक equal level पे हैं. अब equal level पे होने के कारण हम देखते हैं कि legislative have the power to counter the action of the executive. And executive have the power to keep a watch on the executive, watch on legislative and judiciary. So that is why the division of power between different organs of the government is also known as the system of check and balance. It is also known as system of check and balance. And the second form of division of power is between the different levels of the government. And between the different levels, what are the different levels of the government? सरकार का क्या क्या स्तर है? 3. तो हम देखेंगे कि एक सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है. पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. अब इसमें हम देखेंगे कि द कांसेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It was included in the Constitution of India after the 73rd Constitutional Amendment Act. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद के तहत ये जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संविधान में लागू किया गया था. So earlier this the power was divided only between the center and the state, between the two levels of the government. But after 73rd Constitutional Amendment Act, हम क्या हो गए, third tier of government बना, and now power is shared between the local government also. Some power are invested in the hands of the local government also. Now local government also have financial power and the power to make some laws also. Next features of federalism में written constitution. Constitution must be written in a federal country. और written constitution का benefit फायदा ये होता है कि written constitution cannot be amended very easily.
जल्दी अमेंड नहीं कर सकते हैं. So since the Constitution of India is written in nature, so that is why it is rigid constitution. Rigid constitution मतलब कि it cannot be amended very easily. उसको जल्दी से बदल नहीं सकते हैं, उसको जल्दी से हम किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं. बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, हम एक आपका लाइन बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोथ फेडरलिज्म एज वेल एज यूनिटरी इन नेचर. Although we are federal in nature, although we are a federal country, but there are some provisions in the constitution which are unitary in nature. It means कि किसी भी कुछ कंडीशंस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघवाद से क्या हो जाता है, वो यूनिटरी हो जाता है, यूनिटरी बन जाता है विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज यूनिक टू द इंडिया. ये हमारे इंडिया के लिए यूनिक है. और कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये फीचर नहीं देखते हैं कि विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल से यूनिटरी बन जाए. सो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ऑल्दो इट इज rigid constitution because of its written in nature, but there are some provisions in the constitution which can be amended very easily by simple majority only. And if we look the constitution in the context of that provision, अगर हम उन provision के आधार पर हम अपने संविधान को देखते हैं तब हमारा संविधान हमें बहुत लचीला नजर आता है, बहुत फ्लेक्सिबल नजर आता है. So in the context of the provision of the constitution which can be amended very easily by simple majority, the Constitution of India is flexible. So the Constitution of India is both flexible as well as rigid in nature. So next देखेंगे हम लोग supremacy of constitution. In a federal country the constitution is supreme, the constitution is sovereign. The ultimate power lies in the hand, lies in the constitution. Everybody derives its power from the constitution. जो संविधान होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है, जो भी सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने पावर को डिराइव करता है. So in a federal country the supremacy of the constitution must be ensured, must be mentioned. So next देखेंगे कि types of federation क्या है. What are the different types of federation? How federation can be formed? ये जो संघवाद है, संघवाद बन कैसे सकता है? तो संघवाद दो तरीके से बन सकता है. There are two routes of becoming a federal country. दो तरीके से संघवाद फेडरेशन बन सकता है. First है coming together federalism and second holding together federalism. So federation can be formed by two ways. First coming together federation and second holding together federation. Coming together federation का एग्जांपल देखेंगे तो यूएसए है एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल इंडिया है. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में देखते हैं हम कि जो डिफरेंट स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स होते हैं वो आपस में आकर के और एक बड़ा फेडरेशन का निर्माण करते हैं. इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो स्मॉलर कंट्रीज होते हैं साथ में आकर के एक बड़े फेडरेशन का निर्माण करते हैं और वो कहलाता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. और कमिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज दैट in coming together federalism the power is equally distributed between the different constituent units of the federation. जो पावर होता है वो अलग-अलग फेडरेशन में, ये फेडरेशन मान लीजिए कि ये फेडरेशन हमारा बना, इसमें बहुत सारे स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट स्मॉल स्टेट्स शामिल हैं. सो पावर जो होगा वो सभी स्मॉल स्टेट्स के बीच में, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर इक्वली डिवाइडेड होगा. The power will be equally distributed between the different constituents of the federation. But in holding together federalism, there is unequal distribution of power, unequal division of power. And also, इसके अलावा हम देखेंगे कि coming together federalism में ये जो constituent units है, जिससे मिल करके फेडरेशन बना है, ये जब भी चाहेगा तब फेडरेशन से बाहर हो सकता है. States or the units of federation have the power to move out of the union. लेकिन in holding together federalism, the constituent units do not have the power to move away from the union, to move out of the union. So that's all. We will discuss some topics of federalism in next lecture. Thank you.